दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। थरबर थार्स में खुश आमदीद। दोस्तों सैटरडे डान क्विज मंथ अप्रैल 2024 इंग्लिश क्विज है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म फॉर ए वर्ड दैट इमिटेट्स द साउंड इट रिप्रेजेंट्स? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए ओनोमेटोपिया, ऑप्शन बी सिम्बली, ऑप्शन सी मेटाफर, ऑप्शन डी हाइपरबोल। तो इसमें करेक्ट जो आंसर है वो ए है, ओनोमेटोपिया। Question number 2. Which of the following is not a type of poem? Option A sonnet, B haiku, C ballad, D simile। तो इसमें कौन सा है? इसका जो है D करेक्ट है, simile। Question number 3. What is the correct spelling of the word meaning extremely funny? Extremely funny meaning का करेक्ट जो स्पेलिंग वर्ड है वो क्या है? ऑप्शन ए है HILARIOUS, B है HILLARIOUS, C है HILERIOUS, D है HILARIOUS। तो इसमें जो करेक्ट है वो ए है, HILARIOUS। Hilarious, it is the meaning extremely funny। Question number 4. What is the term for a word that has the same meaning as another word? Option A homonym, option B synonym, ऑप्शन सी एंटोनियम, ऑप्शन डी मेटाफर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है, जो है सिनोनिम। व्हाट इज द टर्म फॉर ए वर्ड दैट हैज द सेम मीनिंग? सेम मीनिंग वर्ड इज कॉल्ड सिनोनिम एंड जो अपोजिट मीनिंग उसको कहा जाता है एंटोनियम। क्वेश्चन नंबर 5. Which of the following is a type of punctuation mark? Option A ampersand, option B hashtag, option C parenthesis, option D asterisk। तो इसमें करेक्ट आंसर है जो पंक्चुएशन मार्क है वो ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, लेकिन सी है पैरेंथेसिस, और डी भी नहीं है। तो 5 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी पैरेंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 6. What is the term for a group of words that expresses a complete thought? So this term is called sentence. What is the term for a group of words? So the group of words that expresses a complete thought is called sentence. फ्रेज नहीं है, क्योंकि फ्रेज जो है वो कंप्लीट मीनिंग और कंप्लीट थॉट नहीं देता, क्लॉज भी नहीं है, और ये जो है वो सेंटेंस है। सी इसका जो है वो करेक्ट है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7. द वर्ड cactus has 2 plural forms and both are accepted as correct. One is cactuses and what is the other? So other one is CACTUSS, और B है CACTI, C है CACTUSIES, और जो D है वो है CACTIES। तो इसमें जो करेक्ट आंसर B है CACTI, cacti, CACTI। Then in other week's Saturday done quiz that is about science. First question, which one of the following scientists invented the World Wide Web? तो इसका करेक्ट आंसर ए है, टिम बर्नर्स-ली in 1989 while working at CERN. Berners-Lee invented the World Wide Web. Question number 2, what does NASA stand for? NASA stand for नेशनल एरोनॉस्टिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ए इसका ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 3, वेयर इज द फास्टेस्ट मसल इन द बॉडी? ऑप्शन ए है द लेग, ऑप्शन बी है द आर्म, ऑप्शन सी है द फिंगर्स, ऑप्शन डी है द आई। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है, द आई। The orbicularis oculi, a muscle around the eye, is the fastest muscle in the human body, which can close the eyelid in 100 milliseconds, or we can say it 1/10 of a second. So this is the fastest muscle in the human body, that is the orbicularis oculi, that is around the eye.
Question number 4, does ice sink or float in water? Options, A option है sink, B है float, C है sometimes it sinks, sometimes it floats. तो उसका करेक्ट ऑप्शन है वो है float. Unlike most solids, ice is lighter than water because when water freezes, it expands and ends up with less mass and less density in the same amount of space. So this is a unique quality of the water that while freezing it expands. Question number 5, how can you tell an insect and a spider apart? So what are the things that distinguish between the insect and the spider? Option A है insects have 3 body parts, spiders have 2. B है insects have 6 legs, spiders have 8. C है insects can have wings but spiders do not. D है all of the above. तो उसका करेक्ट आंसर जो है वो D है. These 3 things are the major things that distinguish between the insect and a spider. These things can tell you that spider is apart from insect. So nears and dears, these are the questions of Saturday done quiz of the month April